with the local authorities and with the local policemen, and he will also be speaking to the collector. He will be speaking to various other officials to make sure that all the arrangements are there in place, and as of now, of course, very little entry that is being made available for the people here. Now, I'd also like to show you the other side of the visuals of how people are waiting here, how people are in fact, with a lot of anticipation, they are waiting here. Throngs of devotees who are present here and are trying to get in and are trying to wait because the 2 p.m. is the time that the Darshan Dwar will again be open, and the kind of anticipation on their faces is very much evident. In fact, we get to see how people have been waiting to go to the new temple, to get a visit there, to go to the entire temple. And of course, this is a line that is now being made. Now that this is going to be 2 p.m., a line is being asked to be made, and people are scrambling to get in the first part of the line. So those are the darshan line, in fact, that the police is asking them to kind of get in. All of them having the flags of Lord Ram, all of them waiting for the Ram temple. Let's try to get in a word from them because they had been scrambling to get in the queue. आप बताइए, मंदिर देखने आए हैं, नया मंदिर देखने? जी, नया मंदिर देखने आए हैं, हाथरस से आए हैं मैडम जी, हाथरस से आए। उत्सुक है नया मंदिर देखने? उत्सुक है नया मंदिर देखने के लिए। आपकी लाइन में लगे हुए हैं आप सब लोग दर्शन के लिए? हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए मंदिर देखने, दर्शन करने के लिए, पूरा परिवार साथ आए, बच्चे लेके आए। Okay, we are also being asked to move, but this is the kind of queues that we see. The people, in fact, the smiles on the people's faces as they are waiting for the entire, for their darshan to carry out. आप बताइए, आप यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए? जी, मेरा नाम आभा गोयल और इस समय तो मैं दर्शन ही करने आई हूँ, पर विश्व हिंदू परिषद की अवध प्रांत की प्रांत संयोजका, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजका, अवध प्रांत मेरे पास था, मैं भूतपूर्व। परंतु इस समय मैं कुछ शब्द बोल दूं। मैं अपने भारतवासियों से कहना चाहती हूँ, भारत में वो अदर कोई भी कास्ट हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब रहता है, मुझे राजनीति से भी कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है, आप इस धरती पे रहते हैं, इस धरती का खाते हैं, इस धरती का पहनते हैं, इस धरती का आप पीते हैं पानी, सब कुछ करते हैं, तो आप धरती की माता के प्रति प्रेम रखो, क्योंकि और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ समन्वय का भाव है, जो सब धर्मों को समेट के चलता है। ऐसा विशाल हमारा देश, भारत देश आज वर्ल्ड भी मान गया हमारे देश के लिए, तो उसके लिए हमारे अंदर भावना हो तो कितनी दुख की बात है। इसलिए मैं यही सबसे कहती हूँ, भैया बहनों, बच्चों से, बुजुर्गों से, कि देश के प्रति कभी गलत ना बोलो। जैसे ये हमारी माता है, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहाँ धरती माता को नाम किया जाता है, भारत माता बोला जाता है, गौ माता बोला जाता है। ये हमारा ऐसा विशाल देश है। ऐसे देश के लिए हमको आज देखिए पूरे देश के लोग उमड़े पड़े हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी सोच रहे हैं कि हम नहीं आ पा रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। बेटा जी आप भी बोलो जय श्री राम। कोई राजनीति ना करे, हमें यही कहना है। आज हमारे लला जी, राम जी बहुत साल बाद, बरसों बाद आए हैं। जैसे जेल से कोई निकलता है कैदी तो बड़ा खुश होता है अपने घर जाने को, आज वो हम लोगों पे अमृत वर्षा करने आए हैं। इसलिए सब लोग सुख होके, खुशी होके और सुख मान के अमृत वर्षा का, इस अमृत वर्षा में भीगो। This essentially is the sentiment here, Rakshita. All of them trying to, get in for that darshan. The smiles on their faces is quite evident from, the anticipation for the new temple to be made. This is the line for the darshan that is now going to be open at 2 p.m. And people are dancing, people are chanting, and that lady that we just spoke to has also spoken about how there should be no politics, but there needs to be a conversation and appreciation for the 22nd of January and for the Ram temple. Right, Priyanka, of course, the atmosphere from both these vantage points, of course, are so colorful and are so enthusiastic and electrifying. Only, people who are there like us are actually able to feel that, isn't it? And right now, as I was reporting from Hanuman Gadi, people are very excited. आप कहाँ से आए हैं और आपने you have taken an oath for Shanknath? मैं हैदराबाद से हूँ,
1.25 लाख बार शंखनाद का संकल्प है मेरा। ऋषि श्रृंग महाराज जी का वंशज हूँ, जो राजा दशरथ के पुत्र श्री यज्ञ कराए उनके वंश से हूँ। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेश श्री यज्ञ करावा। अभी तक So that is Shankhnaad. For every auspicious beginning in Sanatan Dharma, we see that the conch shell is of course sounded, and you can see bhajans also reverberating. हम उनको लाएंगे भारत में, फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। You can see the atmosphere here and in Ayodhya, and of course as Priyanka was showing you how devotees have also gathered up outside Ram temple. They know that they cannot actually enter the Ram temple right now, but they want to catch a glimpse of what is in store for 22nd of January. Chief Minister Yogi Adityanath, in the latest viewers that telling you all the updates, is right now in Ayodhya, and we are also getting to know some more details. I'm unable to understand what my producers are saying, so I'll try and reconnect. But we are getting you all the latest updates from Ayodhya viewers, and right now Yogi Adityanath is at Ram Temple. He has also clicked a picture in front of the Ram Temple, as we just showed you those exclusive pictures that were played on our screens right now. Take us through the atmosphere once again, and of course Chief Minister Yogi Adityanath with that picture, he looked so happy. You know, Rakshita, we saw when the airport was also, yes, I can hear you, Priyanka. Please go ahead. I cannot hear the audio very clearly. Please go ahead. You know, Rakshita, we are being joined by the devotees. The lines of the devotees only getting longer, and women chanting the bhajans, and in anticipation to go inside the temple. And all of them, in fact, wanting to go inside, as they will be doing so in just a few minutes from now, because the lines have started. The throngs of the lines of the devotees, in fact, is in place, and this is going to be at 2 p.m. that the darshan line, the darshan is going to be allowed for, and then they will be able to go inside. Let's try to speak to them as well, because you know the excitement on the people's faces is very much evident, and that they can barely contain themselves as they are singing that bhajan. मैम आप अंदर जाएंगे, अभी आप लोग भजन गा रहे हैं, भजन गाते मतलब रुके हुए हैं बस राम लला के दर्शन करने? रुके हुए। रघुपति राघव राज राम पतित पावन सीताराम. So those are the bhajans that are being sung by the women here, and of course we will speak to more of the people as well who are present here. We'll try to get in a word from them to understand how. अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमें चाहते हैं कि मोदी और योगी राष्ट्र भक्त के साथ साथ राम भक्त भी हैं, और इसी कड़ी में हम प्रयागराज से, वहाँ नाम मनोज शुक्ला है, हम मोदी के बहुत फैन हैं, मोदी के बहुत राष्ट्रभक्त, मोदी के नाते राम भक्त भी हैं। इसी छोटी सी गीत सुनाऊं मैडम? बोलिए, गाइए। मोदी जैसा राष्ट्र भक्त ना हुआ न कोई होने वाला, मोदी जैसा राष्ट्र भक्त ना हुआ न कोई होने वाला, विश्व पटल पर भारत माँ का डंका शेर बजा डाला, योगी जैसा राम भक्त ना हुआ न कोई होने वाला,
अयोध्या में अब राम मंदिर बन कर गए बनने वाला, बन गया मंदिर हो गया काम, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बदल रहा है जमाना मोदी का, जमाना योगी का, अरे बदल रहा है देश अवर अब बदलेगा परदेश, जमाना मोदी का, जमाना योगी का। घर घर में भगवा लहराए, राम राज फिर आया है, कल युग में थे ताज जैसा ये जलवा फिर दिखलाया है। वो कृपा किसकी है? जमाना मोदी का, जमाना योगी का, अरे बदल रहा है। So, you know, this essentially is the mood here, Rakshita. As more and more people are in fact here, and we will try to speak to them as well, because he broke into a song, and that is essentially what is happening. When we are trying to speak to them and trying to understand what it is that they are feeling, they break into songs. पर आप बताइए, आपने गाना तो काफी अच्छा गाया, पर किस तरह से आप देख रहे हैं नया मंदिर बना है, मंदिर खड़ा हो रहा है? अयोध्या हमेशा अयोध्या थी, अयोध्या कभी हारी नहीं। ये मनु की संस्कृति है, भाग्य संस्कृति है, हर्षण संस्कृति है। भगवान राम की यहाँ पीढ़ी हो गई और कितने भक्त कुर्बान हुए। कितने हम लोग 90 में आए थे तो पैदल यात्रा आए थे। So, you know, Rakshita, that's the mood here as they speak about, the new temple and what they are looking forward to as far as 22nd January is concerned. Back to you, Rakshita. Yes. I believe you also have some people around you. Yes, of course, we are surrounded by so many devotees and people who are so excited about Ram Lalla. In fact, I have with me another Bhakt who is right now holding in his hand the sand that was used for Ram Temple. हम लोग ये राम मंदिर के अंदर से ये मट्टी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र भूमि की मट्टी है। मैं पुणे से संजय डागा हूँ, मेरे खेत में इसको लेके जाऊँगा और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपका अभी अयोध्या में आगमन हुआ है तो पूरे विश्व में एक शांति लाइए और बंधु भाव का भाव जागृत कीजिए। धन्यवाद। और ये आप जैसे किसी को देंगे आपके पास रखने के लिए? ये मेरी जो पुणे में खेती है उस खेती में मैं ये मट्टी डालूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे आगे की सारी पुष्टियों को राम जी का आशीर्वाद बना रहे। Or you can see the emotion that is linked with Ram Temple. The politics continues, but we know how people are actually connecting with the Ram Temple. As devotion viewers knows no bounds, and we at Republic TV are getting you more and more reports. And this is one report that we are showing how devotion has no borders, no nationalities. There's no borders, there are no foundations. It rises above nationalities. It rises above religion, viewers. Here is a tribute by Cassandra, who's a German singer, I'm told, and she has posted her version of a Ram bhajan. Take a listen in. राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। So of course, it's a melodious tribute there that we just showed you, and Republic TV is getting you the latest inputs from Ayodhya. It's a colorful atmosphere. It's entirely Rammay, and our reports and our live inputs will continue on the other side of this very short break. Stay tuned to Republic TV as the Ram Mandir is going to be inaugurated very soon. Exclusive videos, exclusive reports only on Republic TV.
पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी ना रुके सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट। स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. भाई इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स जमीन से जुड़े। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I knew that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom B-Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. Viewers, we are live from Ayodhya right now as we are counting down to the grand inauguration of the Ram temple, and I have with me devotees, of course, and they all want to speak. Sir, you are from Maharashtra, you were telling. I am from Maharashtra, just near to Pune. Alandik Tirth Kshetra is there. ज्ञानेश्वर महाराजानां समाधि स्थानम विद्यते तत्र। मैं जिस संप्रदाय से हो, वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी। जब राम राज्य होता है तो उस समय में क्या परिस्थिति होती है, वो तुम हमारे तुकाराम वारकरी संप्रदाय के जो तुकाराम महाराज जी है वो कहते हैं कि अब राम का राज्य होता है तो उस समय में संसार में किसी को भी किसी बात की कमी नहीं होती। झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी, धरणी धरे पीक। इस भूमाता से जो है हमारा सस्य जो है, मतलब ये धन्य धान्यादिक जो है वो बहुत उपज होती है उसकी। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, गोमाता और महिषिया ये जो है वो बहुत दूध देने लगती है। दूध भी बहुत हो जाता है, मक्खन भी बहुत हो जाता है। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ होये। हम जो प्रजाजन जो है वो नित्य राम नाम का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। धरणी धरे पीक, गाई ओळल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ उभे।
कब करेंगे? दलिता कांडिता जेविता गे भाई ये मतलब जब भी वो पुराना जमाना था उस समय में वो पिसा जाता था, वो हट्टी पे पिसा जाता था, तो उस समय में वो भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवान का रामचंद्र प्रभु जी का गुणगान करते हैं, दलिता कांडिता भोजन करते समय भी भगवान का गुणगान करते हैं। यानी कि काफ़ी कुछ अब फिर से चेंज आने वाला है, अयोध्या में भी बहुत चेंज दिख रहा है। मैडम, मैं बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और यहाँ का विकास, जैसे कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या राम मंदिर बनने से कोई विकास नहीं, क्या रोजगार, क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे राम मंदिर बनने से यहाँ की सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और प्लस घाट और यहाँ की सड़कें, ड्रेनेज, वो सब कुछ दिख रहा है, आदमी देख रहा है। यहाँ रोजगार से लेके काम भी टॉप 1 का हुआ है और जो 500 वर्षों का तपस्या था उसका परिणाम का फल है जो राम लला का या प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की स्थापना हो रही है। धन्यवाद। राइट। राम लला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूँ, राम लला तेरे छाया में दिन जिंदगी गुजार दूँ, दिल खुश हो जाए तेरा इतना मैं प्यार दूँ, सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, जिस दिन मिल जाएगा दर्शन मैं तर जाऊंगा, जिस दिन मिल जाएगा दर्शन मैं तेर जाऊंगा, अपने आस पास में मेरा ठिकाना बना दो, सुबह शाम पूजा करने मैं चल आऊंगा, सुबह शाम पूजा करने मैं चल आऊंगा। So that's of course a melodious tribute once again that we are showing you, and viewers, of course the preparations are underway. My colleague Priyanka Sharma has filed a report from ground zero, and this is a glimpse of the main bell, the Trishul, and the 1000 liters of Ganga water that will be used for the consecration ceremony for the Pran Pratishtha on 22nd of January. So let's take a look at this exclusive report filed by Priyanka Sharma. So we have a lot of things that have already started coming in for the temple. In fact, they are in place. This is the main bell of the temple that has been shown to our viewers once again. But we're starting our journey to show our viewers how essentially all of the things have been kept here. Now, this was the main bell that has been kept. Now, let's take you towards where essentially the other materials have also been kept. There are several other bells as well that have been kept here. A lot of new additions that we are seeing as there are just hours left for the consecration ceremony to take place. You can see that these are the bells that will be installed inside of the temple, and of course we are looking at another interesting addition is that this is the religiously significant water that has been brought in. Now this is Bela Jal that has been brought in, that is Gulab Jal. So this is an entire bottle of this religiously significant water that has also been sent for to be given it as an offering to Lord Ram on the 22nd of January. So these are things that have been sent by the people from across the country, and that helps us understand how essentially the sentiment of the people is. And these are of course another kalashes that are filled with all of this jal that is present here. So these essentially help us understand what all has already come. Another significant addition is that of the Trishul that has been kept here as well. Now another Trishul that has been kept here. Apart from that, there are several other sizes of the Trishuls that you can see here that have been kept here. They will be installed in some place or the other of the temple, perhaps not the main temple, but the Shiv temple as well that has been kept. Now apart from that, of course, we keep seeing that kalashes filled with either jal or ghee that is being brought here in Ayodhya from across the country, from across the world. In fact, there are people who are going and doing their padyatras, and the beautifully adorned idols that have also been kept of Ram, Sita, Lakshman and Hanuman, along with Ganesh ji as well. So these are some of the idols that we also get to see adorned in beautiful clothing, as they will also be kept in some part or the other of the temple. Other parts, other idols in fact have also been kept along with the Gada
of Hanuman, along with the shivlings that have been kept here, and that essentially helps us understand how more and more offerings for Lord Ram are pouring in. We did show our viewers a report from here just a couple of days ago, but in just a few days it has added, there has been so much addition to the offerings that are coming from across the world. We are looking at small, big kalashas that are being filled. These entire bottles filled with the Ganga Jal, bottles filled with religiously significant Jal as well that is being brought in. Once again, we had also seen that there is a kalash that is filled with the water from 5 to 6 rivers there in Nepal. Apart from that, all of these filled with the ghee and water as well. So these are some of the additions to the offerings that will be made to Lord Ram on 22nd of January. We are tracking for you as to how the preparation is also being carried out for the 22nd of January, and this helps us get a glimpse into how people, in fact, from across the country, because of their sentiments, because of their faith in Lord Ram, are bringing their offerings for Lord Ram. There was a big idol here of Lord Ram that has also been shifted, but now this is Lord Hanuman's statue, a new statue that has now been brought in, and we are now looking at more and more of these waters that has also been brought in from across the country. So that essentially helps us understand the sentiment of the people and how they are sending their offerings from thousands of kilometers ahead, and they are bringing them on padyatras, they are bringing it via special chariots and vehicles, and now all of that has been kept in this room behind me and is all set for the 22nd of January as well. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic. PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18-karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange-free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। जब पेरेंटल कंट्रोल के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नू टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा है जी
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। सर मेंबरशिप ओवर। पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा भूप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब it lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year। कि मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। We are live in breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. India's leading agarbatti brand Parimal Bharat Vasi aromatic incense sticks is making waves with a special anthem celebrating the much anticipated return of Lord Ram to Ayodhya. This anthem beautifully encapsulates the fervor and anticipation surrounding the construction of the Ayodhya Ram Mandir, where prayer takes center stage. Stay tuned for an insightful glimpse into the excitement and preparations unfolding across India, uniting communities in a shared moment of devotion. Here are the headlines. 2 days ahead of the mega Pran Pratishtha ceremony, Republic accesses exclusive images of Ram Lalla idol. तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश, ये चीजें देखता हूँ। He asked people to illuminate their homes with Ram Jyoti on Jan 22nd. CM Yogi Adityanath reviews preparations at Ram Temple, offers prayers ahead of consecration ceremony. Historic Ayodhya verdicts, judges invited for Pran Pratishtha, CGI Chandrachud, ex-CGI Gogoi among invitees. Aam Aadmi Party Congress talks on Punjab hit a roadblock, a focus on Delhi now. Month after expulsion from Lok Sabha, Mahua Moitra vacates official bungalow. Supreme Court rejects plea of 11 convicts in Bilkis Banu case. Top court orders all convicts to surrender by Jan 21st. Viewers, our top story, Ayodhya and UP is going to witness one of the biggest ceremonies in recent years in the form of Ram Temple Consecration. The ceremony will be held on Jan 22nd and attended by the Prime Minister Narendra Modi, who will also
be the chief guest. Many other dignitaries, including sportspersons, will also attend the event. The affairs of the temple and overseeing of the ceremony is being done by Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. Let's go straight to my colleague Priyanka, who is on the ground getting us every detail from Ayodhya. Priyanka, I'm coming to you right now. And of course, what our viewers are watching on the screen, Priyanka, is that first photo of the Ram Lalla idol inside the Garbhagriha of Ayodhya Ram Mandir. Now, this is the image accessed by Republic TV. But take us through what's happening on the ground. A lot of excitement there, Priyanka. Well, Shivangi, the excitement is inevitable here because from where we are standing is the queue that is going inside the Ram temple. And this essentially is the mood here. That is not just outside the temple because we're about 100 meters away from the temple. This is the line that will go inside for the darshan. And the chants of Jai Shri Ram are in fact very much visible here. Everyone in fact chanting that. Look at their faces. And that essentially helps us understand how they are in fact, gearing up to go inside. We'll try to speak to them because, the excitement is in fact contagious because we are looking at all of them, the throngs of line of devotees who are going inside. आप बताइए, काफी खुश लग रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी है। हर युवा को खुशी होना चाहिए कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं अपने घर में और सभी युवाओं से यही प्रार्थना है कि सब अपने घर में दिया जलाएं और राम नाम से कीर्तन करें। जय श्री राम। 22 जनवरी का I came from Andhra Pradesh, Tirupati, to see our जो राम जी उसका घर फिर वापस आ गया। हमेशा इधर ही रहता है। ये देखने के लिए हम आया था। हमारा भाषा में बोलेंगे तो भाषा में बोल देते, मगर हिंदी में थोड़ा थोड़ा आते, थोड़ा थोड़ा बोल दिया। All right, so this is 22 जनवरी को समझिए दूसरी बार दीपावली फिर से मनाई जाएगी। हर 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो अयोध्या में कभी ऐसा देखा है? अयोध्या वैसे आप नजदीक से ही आए हैं। जी, बहुत देखा है। बहुत बढ़िया परिवर्तन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा भी और भक्तों द्वारा भी। 22 जनवरी के ऊपर जो बातें हो रही हैं उसको क्या कहेंगे? काफी सारे विपक्ष के जो लोग हैं वो नहीं आना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का इवेंट है। आप 100 मीटर दूर खड़े हैं मंदिर से, क्या कहें? देखिए मैम, ऐसा है कि ये तो निरर्थक बातें हैं। मोदी जी, योगी जी के शासन काल में जो निर्णय हो गया है वो अनंत काल 500 वर्षों से चल रहा है। निर्णय हो गया है, विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष में भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी लोग हैं। सकारात्मक भूमिका निभाए विपक्ष भी। वोट हम लोग अपने मन से देंगे, किसी को भी कोई वोट दे, वोट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सकारात्मक भूमिका में सभी आदरणीय बने रहेंगे, सभी विपक्ष के नेतागण। Let's try to pan our cameras more because the line is moving quite fast and what we see is chants of Jai Shri Ram. किस तरह से देख रहे हैं? 22 जनवरी नजदीक आ रहा है, एकदम पूरा जश्न का माहौल लग रहा है अयोध्या में। ये इत्र और इतिहास की नगरी में कन्नौज से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, और ये भगवान राम 5000 वर्षों बाद ये अयोध्या टेंट से राम मंदिर में प्रवेश कर रहे। ये माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की और इस 140 करोड़ हिंदुओं की देन, ये 140 करोड़ हिंदुओं की आन मान शान की बात थी और हमारे पूर्वज 5000 वर्ष तक जिसका इंतजार करते रहे, आज वो घड़ी आ गई। प्रभु श्री राम की कृपा, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, सिया बल रामचंद्र की जय। और मैं तो ऐसे कौम में पैदा हुआ, मुझे गर्व है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दी थी इस राम मंदिर के लिए, और माननीय उमा भारती जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, जिन्होंने अपनी कुर्सी की बलिदान त्याग करके, और साक्षी महाराज जी ने, ऐसे कौम से मैं पैदा हुआ हूँ। All right, we'll let him go because the line is getting rushed by the police, of course, as the security is quite tight here. But that is the sentiment of the devotees going in. All of them, you can look at their faces, and that alone is a big statement. As they are dancing, they are chanting, they are. Let's try to speak to the people, in fact, who are also. क्या कहना चाह रहे हैं आप? जा रहे हैं अंदर, राम राज में जा रहे हैं, राम जी का दर्शन करने, सब पर राम जी का कृपा बना रहे। जय जय सिया राम। So
So this essentially is, the mood here, Shivangi, on the ground, just 100 meters away from the Ram Temple, the main Ram Temple, which in fact is going to be where the consecration ceremony will take place on 22nd. Everyone has some or the other opinion about what is happening as far as the politics go, but the enthusiasm is all-encompassing, the kind of, the fervor with which they are entering into the city of Ayodhya, the fervor with which they are entering into the temple right now is all-encompassing, all of them with the same sentiment and the same enthusiasm as they enter into the Ram Temple, where we are reporting from just 100 meters away from the temple as well. Back to you, Shivangi. All right, let's go to Rakshita, who's also joining us live. And Rakshita has been on ground. And Rakshita, a short while back, we know UPCM had visited the Hanuman Mandir, the Hanuman Gadi temple, and he has taken a picture in front of the Ram temple, Ayodhya. He's taken a picture standing in front of the Ram temple. It's a very beautiful picture that he has taken. Take us through what else can we expect. He is in Ayodhya and he's looking at all the preparations and scrutinizing the security as well. Well, Shivangi, we are getting to know that he just visited Ram Temple, and after that he is right now, what we're getting to know in the latest, that he's at the Lata Mangeshkar Chowk. So Chief Minister Yogi Adityanath is at the Lata Mangeshkar Chowk, and he is also now headed towards Saryu Ghat, where the power boats have started, the solar powered boats in fact. The trial run took place just yesterday. We were at the Saryu Ghat yesterday, and also of course the Ram Ki Paidi that is just adjacent to that. And right now what we're getting to know is that Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya, and back-to-back, he has back-to-back engagements on your screens right now. Visuals, we are just going to get you those visuals shortly of Chief Minister Yogi Adityanath visiting the Lata Mangeshkar Chowk. That is an important spot, attractive tourist attraction in Ayodhya as well. And he is also going to the Saryu Ghat, where we see the solar-powered boats will be taking off today. And that, of course, is another interesting feature as far as the preparations for Ayodhya is concerned. Preparations not just for the Pran Pratishtha ceremony, not just for Ram Temple, but the tourism, the footfall that will increase every day. That is something that will be witnessed. And what we know, so all right, I am told that we're getting visuals on our screens now. Ayodhya is gearing up, of course, to welcome pilgrims. So there will be solar-powered boats also. So there is energy saving as well. As far as tourism is concerned, it will be a boost for tourism. At the same time, it will be there will be energy conservation. High-tech solar-powered boats will also run on the Saryu River, making 8 to 10 trips a day. That is what we are learning. And Chief Minister Yogi Adityanath is at the Saryu Ghat. In the latest, what we know so far, viewers, remember, he has back-to-back meetings also today as he is inspecting the preparations for the Ram Temple. Remember, today, Chief Minister Yogi Adityanath in the morning arrived in Ayodhya, and he paid a visit to Hanuman Gadi Temple, the location where I'm speaking from right now. And he first visited Hanuman Gadi Temple, prayed for the prosperity, well-being of Uttar Pradesh, and later on we saw him visiting Jagat Guru Ram Bhadracharya ji as well, and Ram Lalla, of course. We saw the temple and the exclusive pictures that Republic TV has accessed. Yogi Adityanath clicked pictures in front of the Ram temple, and he looked so happy and proud. Also, we could see that on his face. He participated in the Aarti and the Parikrama also in the temple premises. So also he inquired, he checked up on the Mahants, the saints who are present there, since there are many of them who have already started gathering around Ram temple. So he spoke to them, he met the saints and the Mahants over there, and people who are associated with the Ram Janmabhoomi Trust. Viewers, they were also present there. They spoke to Chief Minister Yogi Adityanath. He was briefed by them about the arrangements that are made. And right now on your screen, viewers, you can see wearing a jacket, wearing a life jacket is the Yogi Adityanath on a solar-powered boat. He is waving to the people at the Saryu Ghat. There are several people, remember, who have descended upon the Saryu Ghat and Ram Ki Paidi, where we were reporting from for past 2 days. I was there for the past 2 days, and there are young, old people from all corners of the country who are visiting the Saryu Ghat every day.
and they're also on the Saryu Ghat attending the beautiful Saryu Aarti that takes place at 6 p.m. in the evening. In every winter evening, it's 6 p.m. So Saryu River is another very pious, a very holy river. There is Aarti and there are boats that are operational, but now they are going to have solar-powered boats because the footfall of the tourists will be increasing. Back to you in the studio, Shivangi. Right. Well, Rakshita, hold on for a second because we are also joined by Priyanka. Priyanka is also on ground. And Priyanka, as we are showing our viewers all the visuals coming in of UPCM Yogi Adityanath, let's also tell our viewers that the 5 judges who gave the Ayodhya verdict have been invited to the Ram Temple's consecration ceremony. So we are expecting that many dignitaries will be there on the day of the inauguration as well. Priyanka, take us through what is happening. You are in fact right outside the Ram Mandir, it looks like. What is happening behind you, Priyanka? Well, yes, to first part of your question, Shivangi, of course, a lot of VVIP movement that will take place on 22nd of January. And the 5-judge constitutional bench, in fact, is no less because, everyone who played any part in this entire agitation first up, and then of course the establishment of the temple, the construction of the temple, anyone who had anything to do about the temple as well has been invited, because this is a historic moment on 22nd of January that they will be they will be witnessing as well in person. So out of those over 8,000 people who will be inside during the consecration ceremony, that also includes the Prime Minister and the various VVIPs whose list has come out, but also a significant part and section of the entire invitees is going to be anyone who has done the struggle, then be it the family members of the Kar Sevaks, then be it the judges, in fact, that passed that order, then be it the main petitioner as well, Iqbal Ansari, in fact, who has also been sent out the invitation of the people who have played small or big roles in the construction of the temple. They are also going to be present inside. So anyone who had anything to do about the establishment of the temple is going to be inside. A very historic day for sure that it is going to be on 22nd of January. And what we see right now is the fervor with which Ayodhya is gearing up. Now, of course, we are at one vantage point. We are about 100 meters away from the main temple, and we'd like to show you as much as we can as to how the construction is still going on, because remember, it's just the one part of the temple, the construction of which has been completed, in fact, just the ground floor, and the sanctum sanctorum inside which the idol has been placed. The idol's exclusive pictures, as you were mentioning earlier, Shivangi, have also been shown to our viewers. And now we are showing you the pictures of the temple, a part of the temple that we can show from this particular vantage point. And we can see the entire limestone building that stands tall, and the engravings that have been done in that stone as well, the stones that have been brought in from Rajasthan, Karnataka and Telangana as well. So these are some of the pictures that we're seeing, but also a lot of scaffolding that we can show our viewers, because not the entire construction has been completed as of now. There is a lot of parts of the temple that will be constructed post 22nd. As of now, we will see that on 22nd, the main part of the temple and the east wall of the Parkota that will stand tall, and that will be visited by the VVIPs as well. Apart from that, the other 7 temples that are being constructed, then be it the Jatayu temple, the Sita Mata temple, the Shabri temple, the Shiv temple, all of that will be shown. Very quickly, we'll pan our cameras to show how, in fact, the devotees are running towards the darshan that they are getting to do, because this is the barricading, the last barricading that is done by the police to make sure that the entire queue of the devotees is well disciplined, and that there is no hindrance to any situation is not created. But as far as beyond the barricade goes, we can see that the devotees are running, chanting Jai Shri Ram, and going inside the temple, carrying out their darshans as well. And that essentially is the mood of the people here, for anyone, in fact, who travels to Ayodhya and comes to see the mandir, comes to see the temple. A very, very emotional moment, a very, very emotional place for the people of Ayodhya. And we see the smiles on the people's faces. That helps us understand the sentiments of the people as they are running inside, carrying out their darshans. All of them chanting, all of them dancing, all of them
saying that this is something that they have been waiting for quite some time. And that's exactly what the pictures show us here, Shivangi, on the ground. That's what we understand. And of course, as and when the 22nd is getting nearer, we will also see that the darshans will be closed from 20th to 22nd. So the last few hours for the darshan are left, and that is why we also see a hustling and bustling line of devotees from across the country who are coming to Ayodhya and are going to be carrying out their darshans as well. Remember, on 30th of December is when the Prime Minister was here in Ayodhya last, and he had spoken to the people of Ayodhya directly and had stated that the 22nd of January is going to be a second Diwali, and that the devotees in fact should abstain from coming to Ayodhya from 20th to 22nd, and that they should light a diya in their homes. But till the 20th, we are seeing the kind of fervor and the enthusiasm with which devotees are lining up and going inside for their darshans. We are in fact reporting from just 100 meters away from the main temple as well, Shivangi. Rakshita is also joining us. We have both Priyanka and Rakshita getting us all the details from ground. Lot of color where both of you are, Priyanka and Rakshita. Rakshita especially outside Hanuman Gadi. But we know, Rakshita, and you have been in Ayodhya for quite a while now. We know there are some selfie points established near different landmarks in Ayodhya. So the devotees can come, they can take pictures, there are statues, there are posters, there are banners. So definitely this is very interesting, especially for all the devotees coming in from all over while everyone is waiting for the big inauguration. Absolutely, there are people from across the country. They are, of course, all heading towards Ayodhya. There are so many people who we've interacted with. They are, of course, coming from various states of Ayodhya, and we are witnessing a big, huge, splurge of tourists here in Ayodhya. In Hanuman Gadi also, we are seeing there's so many people, and there's heavy security deployment. As you can see, the Rapid Action Force, UP police is also here. Even the NDRF team right behind me is the NDRF team. Also, there are several security personnel, companies who have been deployed at Hanuman Gadi, and of course where Priyanka is. So there is really, the security has been beefed up because people, and the biggest part is that there's no inconvenience. People are actually carrying out their darshan. They are visiting all the holy sites, all the tourist attractions and the pilgrimage spots in Ayodhya. And everything is, of course, very colorful, as you were pointing out. But there is no, there's no inconvenience. That is because, of course, there are some blockages right now as Chief Minister Yogi is there in Ayodhya. So the prime location around Ram Temple, Hanuman Gadi, the roads, of course, are blocked till Chief Minister Yogi Adityanath is on his visit. And right now, as we were showing you viewers, that Saryu Ghat is the place that actually sees witnesses, huge number of people turning out every day and every night. Beautiful light shows happening, people taking selfies, video blogging happening. Here at Hanuman Gadi also we saw a lot of video blogging happening. There are selfie points at Lata Mangeshwar Chowk as well. To get you more details on that, viewers, our live and rolling coverage continues on the other side of this very short break from Ayodhya. Stay tuned to Republic TV. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा।
अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Amity faculty have filed over 2100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ। Welcome back, viewers. Several states are sending gifts to Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha on Jan 22nd. More recently, the Chief Minister of Madhya Pradesh is sending 5 lakh laddus made in Ujjain. The prasad was loaded in trucks from Bhopal and is en route to Ayodhya today. More on this in our next report. 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। फिलहाल बात की जाए तो हम आपको बता दें कि महाकाल की नगरी यानी कि महाकाल ट्रस्ट के द्वारा भगवान महाकाल का जो भोग है 5 लाख लड्डू जो है वो अयोध्या भेजे जाने, और ये देखिए 5 जो ट्रक हैं इनमें 5 लाख लड्डू हैं जो महाकाल का प्रसाद है वो 5 लाख लड्डू के रूप में यहाँ से इन 5 ट्रकों से यहाँ से अयोध्या भेजे जा रहे हैं और यहाँ अयोध्या में रामलला को इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। देखिए 1 2 3 इस तरह से पूरे 5 ट्रक हैं और उसमें 5 लाख लड्डू हैं जो कि महाकाल का प्रसाद है, और इस प्रसाद का प्रसादी रथ जो है ये यहाँ से रवाना हो रहा है और ये रथ जो है अयोध्या पहुँचेंगे और अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें इन्हीं लड्डुओं से भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन ट्रकों को हरी झंडी दी है। महाकाल के मंदिर में इन लड्डुओं का जो है निर्माण हुआ था। वैसा देखा ये देखिए इस तरह के लड्डू हैं जो यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो लड्डू है अयोध्या जाएंगे, वहाँ पर भगवान राम को इनसे भोग लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ से ये 5 ट्रक जो हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। इनमें 5 लाख लड्डू हैं और इन लड्डुओं से ही रामलला को भोग लगाया जाना है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्येंद्र सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। Viewers, much more coming up. Aam Aadmi Party Congress talks on Punjab hit a roadblock. Focus on Delhi now. Month after expulsion from Lok Sabha, Mahua Moitra vacates official bungalow. Stay tuned.
Kia, movement that inspires. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नू टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। देख इत्तू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले भाई, इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। Ahead of the mega Pran Pratishtha ceremony, Republic accesses exclusive images of Ram Lalla idol. 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश, ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। Prime Minister Modi asked people to illuminate their homes with a Ram Jyoti on Jan 22nd. CM Yogi Adityanath reviews preparations at Ram Temple, offers prayers ahead of the Consecration ceremony. Historic Ayodhya verdict. Judges invited for Pran Pratishtha. CGI Chandrachud, ex-CGI Gogoi among the invitees. Aam Aadmi Party Congress talks on Punjab hit roadblock. Focus on Delhi now. Month after expulsion from Lok Sabha, Mahua Moitra vacates official bungalow. Supreme Court rejects plea of 11 convicts in Bilkis Banu case. Top court orders all convicts to surrender by Jan 21st. Viewers, getting some big breaking updates coming in right now. Congress President Mallikarjun Kharge writes to the Secretary of High-Level Committee for One Nation, One Election. In his letter, he said that the Congress rejects the idea of one nation, one election. That is right. Let's go straight to Abhishek Kapoor, our senior executive editor, who's joining us for more. Abhishek, I'm coming to you right now. And if you could take our viewers to what exactly has been breaking right now. Now, we know that Mallikarjun has
written to the Secretary of High Level Committee on One Nation, One Election, and saying that Congress does not, I repeat, does not accept this idea of One Nation, One Election. Take us through the details coming in, Abhishek. Well, you see, a lot of consultation has been happening between the the committee led by former President Ramnath Kovind, the One Nation, One Election Committee. And for example, today he has had deliberations with former chief election commissioners and retired judges. But in between, among the 300 odd replies that have come, including from national parties, the one which has been received by the Commission Secretary, Nitin Chandra, from the Congress party says that the Congress is very clear that one nation, one poll, or one nation, one election is not a good idea. Now, as I said, this is part of the larger consultative mechanism. Even as we speak, consultations have gone on with the eminent jurists, including former chief justices and former chief election commissioners. So this is not the end of the story, but this is clearly Congress's position now. Congress does not want the country to have one nation, one poll. They have earlier also opposed the idea. They have not even said that this needs to be debated, unlike other parties. So Congress formally now putting it in writing and sending across to the Ramnath Kovind panel that they are not in support of this one nation, one poll idea. We are told that the committee is going to submit its report before the government, possibly ahead of the general elections, possibly ahead of the announcement of general elections by the Election Commission, which means that this should be happening anytime immediately after the budget session, which ends on February 9. But Congress party making it clear that they are not for one nation, one poll starts another debate, another round of conversation in a democracy, whether the kind of incessant elections that we have just ended 5 state elections and we are heading into general election cycle, and immediately after general election cycle is over, towards the end of the year, we would be again having elections in states like Haryana and Maharashtra, among others. So I think this is something which is an idea started by Prime Minister, but has been in the public domain for a while, and the panel is looking at all aspects. As I said, even as we speak, eminent jurists, former election commissioners, everyone being consulted. Congress making its position clear that they are not for one nation, one poll, irrespective of all the benefits that come from the process and the decision. Right. And Abhishek, we know that many opposition parties, the CPI, CPIM, the DMK, TMC, AIMIM, NPF, Naga People's Front have proposed a proposal, have rejected this proposal in the past. It's not a very big surprise that that Mallikarjun Kharge has said and that the idea of one nation, one election has been rejected from their end. Is it, Abhishek? You are absolutely right. This is no surprise, though almost the entire opposition does not like the idea, A, because it comes from the BJP, B, because it's personally shepherded by the Prime Minister, and they see in it the possibility of the BJP benefiting from the tailwinds that it gets because of the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And they believe that while in the general elections, it's almost turned into a presidential kind of election where they have no answer to Narendra Modi. Instead, they get some reprieve. So, for example, in Telangana, Congress party has recently won. Karnataka Congress party has recently won against a very weak leadership of the BJP in the case of Karnataka, and an anti-incumbency against the case of BRS in Telangana. So the Congress hopes that at least if there is this fractured elections by and by happening, the Congress holds some chance at least of getting into states and other parties, regional parties also. But if there is a combined national and state elections going to be held, which is the idea behind the one nation, one poll, then obviously the weight of the personality of the Prime Minister and the it gives to the BJP might advance the BJP. That's thought in the opposition, and that's why, Shivangi, you are right, one after the another, every opposition political party have said no to this idea before the Ramnath Kovind panel. Right. Well, thank you, Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, for getting us those details coming in. Congress rejecting one nation, one poll. And of course, that is not a surprise because in the past, the opposition parties and the Congress have not been too keen on one nation, one poll. Let's move ahead to the other breaking updates that we are getting for our viewers right now. In fact, let's move ahead to the other big breaking update we're getting for you. A fire erupted at the DRDO office in North Delhi, but firefighters
have managed to extinguish the flame after an hour of efforts, concerted efforts that have been going on to control this fire. Presently, ongoing firefighting endeavors continue on the 6th floor of the DRDO office. That is right. Those visuals on the screen as well, viewers, where a fire has broken out. You can see the firefighters are fighting that the blaze. The firefighters trying to control the blaze. And this happened at the DRDO office in North Delhi. Firefighters managed to extinguish the flames after an hour of concerted efforts. Presently, ongoing firefighting endeavors are continuing on the 6th floor of the DRDO office. That is right, on the 6th floor. So right now, the firefighting efforts are still underway. That's what we are learning of at this point of time, viewers. Including the details which have come in is this, that the firefighting efforts are still underway, and the fire in the DRDO office has been doused after 1 hour of effort. So it took 1 whole hour to douse the fire, but still firefighting endeavors are continuing on the 6th floor of the DRDO office. Let's move ahead, viewers, to the other story that we are tracking on Republic TV. Expelled TMC MP Mahua Moitra received multiple eviction notices instructing her to leave her government residence in Delhi. Following the dispatch of a team of officials to carry out the eviction, Mahua Moitra has voluntarily vacated the government residence. Here's more on this development. Mahua Moitra got no relief from the Delhi High Court as she approached Delhi High Court to allow her to stay in her official residence, which is 9B Telegraph Lane. But today, Mahua Moitra, the expelled member of Parliament of TMC, who she was expelled from the Parliament on 8th of December 2023, and today her official residence, government residence, have been completely evicted, and clearly could be seen the visuals as the police officials are right now here outside the residence of Mahua Moitra. In fact, the officials from the Directorate of States are also outside the residence of Mahua Moitra. The key of her residence have been officially handed over to the officials of Directorate of States earlier. Also, the first time when Mahua Moitra approached Delhi High Court clearly stated Mahua Moitra that she should request Directorate of States to allow her to stay in her official residence 9B Telegraph Lane. These are the visuals outside her residence. We could clearly see that some of the laborers are also standing outside her residence as they were called early in the morning to shift all the stuff from Mahua Moitra's residence to some other location. Right now, the entire house has been completely vacated by Mahua Moitra. The keys has been handed over, but we also could see the vehicle, the official vehicle of Mahua Moitra, still standing outside her residence 9B Telegraph Lane. But this residence now no more belongs to Mahua Moitra. Morning at around 9 a.m. the shifting process started in the house of Mahua Moitra. She started shifting her stuff from her official residence 9B Telegraph Lane. Now this house is completely vacated and evicted by Mahua Moitra. She was expelled for her because there were serious allegations of the cash for curie, and also that she exchanged money in exchange for questions to the Hiranandani Business Conglomerate Ethics Committee found the unruly behavior of Mahua Moitra, and therefore she was suspended and expelled from Parliament. Ayodhya in UP is going to witness one of the biggest ceremonies in recent years in the form of Ram Temple Consecration. The ceremony will be held in Jan 22nd and attended by Prime Minister Modi, and will also be the chief guest that day. Many other dignitaries, including sports persons, will also attend the event. निवेश है, और इस निवेश से जो आने वाले समय में मजबूत भारत का और ज्यादा, इसमें हम विकसित भारत की इस कड़ी में 2047 से पहले की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रबल और सशक्त होती हुई नजर आएगी। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया अत्याधुनिक जो आपके सामने है,
इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उन्होंने ये उद्घाटन किया है। कई मायनों में बेहद खास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह से इसमें और क्या नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं, इन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आने वाली जो कार्य प्रणाली है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आयशा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, कई मायनों में बेहद खास, क्या नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर? जी देखिए, बोइंग इंडिया भारत के साथ लगातार करीब 80 साल से पार्टनरशिप में है और पिछले 10 सालों में भारत यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और गहराई है। और ऐसे में जो एरोस्पेस जायंट है बोइंग इंडिया, वो भारत के साथ मिलकर निवेश करना चाहता है भारत में। और बोइंग इंडिया ये मानता है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है और भारत में जो मार्केट है, इस मार्केट को केटर करने के लिए बोइंग इंडिया अपना सप्लाई चेन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये फैसिलिटी जो है रिसर्च और इनोवेशन विंग है और इस फैसिलिटी के जरिए बोइंग इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स है, अपनी सप्लाई चेन में नए आयाम, नए इनोवेशंस लाना चाहता है। तो बोइंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा निवेश का मौका है और बोइंग इंडिया इस फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को और ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता है। देखिए, बोइंग इंडिया भारत में न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस में हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत, भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है। So the visuals coming in of PM inaugurating the Boeing facility in Bengaluru, and we are tracking these developments coming in as the Prime Minister is visiting Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu today. So right now we see that the Prime Minister is unveiling the Boeing facility. It is the state-of-the-art Boeing India Engineering and Technology Center campus in Bengaluru. This is a very, very special place because it's built with an investment of 1,600 crores. The 43 campus is Boeing's largest such investment outside the USA, making it extremely, extremely important. Let's go to Prajwal, my colleague, who's joining us live right now. Prajwal, Boeing's new campus in India will become a cornerstone for partnership, especially with the vibrant startup, private and government ecosystem in India. It will help develop the next generation products and services for the global aerospace and defense industry, Prajwal. Shivangi, because remember that Prime Minister Narendra Modi has always stressed on Atmanirbhar as well, and the Boeing India Engineering and Technology Center campus in Bengaluru will remain one such center as well, because it has the capacity to go on and house 5,000 scientists as well, engineers mainly, and they will be working on the R&D as well as the development and manufacturing too. And this is now being, this has been built with an investment of 1,600 crore rupees across 43 acres. So you can also look at the engineering marvel, but at the same point of time, the sort of job opportunities it can create for the people over here too. And also, this will also go ahead and provide this vibrant boost that is needed for the ecosystem, mainly the startup ecosystem as well. And also, both the private and the government ecosystems of India is in fact invested in this and will also help develop the next generation products for India as well as for the
global aerospace and defense industry too. And we also saw that this is the first time that Boeing is investing such a huge amount of money, as well as such a huge campus as well outside the United States of America as well. So therefore, this is something which was being seen, and not only this 43 acres and the 1,600 crores of investment that is being seen, but the Prime Minister will also be launching the Boeing Sukanya program that aims to support the entry of girl children from across India into the country's aviation sector as well. So this is yet another program that he will be launching in association with Boeing as well. And this program also, the Boeing Sukanya program, will also provide opportunities for girls and women from across India to learn critical skills mainly in the fields of science, technology, engineering, and maths too. And also for the young girls, the program will create about 150 STEM labs and in planned locations to help spark interest in STEM careers as well, because this is a growing field too. And this program will also be providing scholarships to women who are training to be pilots as well. So it's definitely a massive boost for technology, for Atmanirbharta, that is self-development, and also going ahead and looking at what Prime Minister Narendra Modi has stressed every now and then, that the field of aviation is growing, and this will only get bigger in India. And now this is a cornerstone as well as a milestone for the Indian aviation industry as well. Back to you in the studio, Shivang. All right, thank you for joining us, Prajwal. Getting us top details coming in. So coming up, viewers on the other side, as you keep getting more updates, the largest Boeing facility outside the US has been inaugurated. PM Modi inaugurating the new state-of-the-art Boeing India Engineering and Technology Center campus in Bengaluru. This is Boeing's largest investment outside the USA. कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया, ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है, और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके, सिर्फ इसलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं, इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I know that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा मैं। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS India, smarter steels, brighter futures. Pooja, you left the job and still so cool? Bro, new challenges bring new opportunities. Oh, really? Seriously, Rahul, my entire house, now it's an online retail store. Look. Wow.
But money? Few years back, I'd invested my Diwali bonus. And now you have LIC's ULIP plan Nivesh Plus. Invest once, get the benefit of both life insurance and maximized returns based on market trends. One sec, Rahul. Madam, you are double cool. UP CM Yogi Adityanath visits Ram Janmabhoomi and offers prayers. He was also inspecting the arrangements ahead of the Pran Pratishtha ceremony. The Confederation of All India Traders announced that Amazon India has been engaged in the deceptive trade practices by selling sweets under the guise of Sri Ram Mandir Prasad. The committee expressed their concerns on the potential damage for the religious sentiments. Cassandra, a German singer, sends her love and devotion to Lord Ram by posting her version of the Ram Bhajan. All the singers globally contribute their love by singing out Ram Bhajans. मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे A sari embellished with a replica of Lord Ram Temple Ayodhya has been sent to Ayodhya from Telangana. The handloom weaver has prepared the special sari embellished with the replica of Lord Ram Temple in Ayodhya. Chief Minister of Madhya Pradesh has sent 5 lakh laddus for Lord Ram, which is made in Ujjain. The prasad was loaded in trucks from Bhopal. The history says that the Ram Lalla enjoys the laddus made by the Mahakal Trust. We are seeing that more than 1 lakh laddus are being prepared in Tirupati, Andhra Pradesh for the Pran Pratishtha ceremony. Much more coming up, viewers. Prime Minister inaugurates the new state-of-the-art Boeing India Engineering and Technology Centre campus in Bengaluru. Stay tuned. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. भाई इतनी बड़ी टाइल इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा है जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली के बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। तो जोड़े वो लैपटॉप से अगे पढ़ाइयां नहीं होंदियां ही बच्चों दियां, जानी दी हुण तो जमा ही भोरा भी नहीं कट के लगता। बिजली का बहुत सोहना सूबा सरकार ने बहुत सोहना काम कीते कि गवर्नमेंट तो बनाती लोगों ने, हुण अपनी नैक्सट जनरेशन किवें बनू, अगली पीढ़ी जिहड़ी है उन्होंने आपां किवें उच्चा लैके जा सकते हैं। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा
ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। सर मेंबरशिप ओवर। पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब it lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year। कि मुझे भी चाहिए। गोल्ड का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। This is Republic Niva Bhupa Studio, your one stop for all the breaking updates. I am Rakshita Mishra. This is Republic Niva Bhupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. Republic accesses exclusive visuals of Ram Lalla idol. All eyes now on the grand Ram Pran Pratishtha. हमको राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश, ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। Solapur Prime Minister asserts Ram Bhakti acts and also asks citizens to light a Ram Jyoti on Jan 22nd. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi reviews Mandir preparations, offers prayers ahead of Pran Pratishtha. Historic Ayodhya verdict, judges invited for Pran Pratishtha, CGI Chandrachur, ex-CGI Gogoi among the invitees. In a mega defense boost, Prime Minister inaugurates the largest Boeing facility in Bengaluru. Tussle over seat share talks continue. Aam Aadmi Party and Congress hit deadlock in Punjab, focus now on national capital. And viewers, Ayodhya in Uttar Pradesh is going to witness one of the biggest ceremonies in recent years in the form of Ram Temple Consecration. The ceremony will be held on Jan 22nd and attended by Prime Minister Narendra Modi, who will also be the chief guest that day. And the many other dignitaries. The affairs of the temple and the overseeing of the ceremony is being done by Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust. Let's go ahead and see this report by my colleague Priyanka, who has been on the ground and getting us all the details. The atmosphere from both these vantage points, of course, are so colorful and are so enthusiastic and electrifying. Only, people who are there like us
are actually able to feel that, isn't it? And right now, as I was reporting from Hanumangarhi, people are very excited. आप कहाँ से आए हैं और आपने एक you've taken an oath for शंखनाद? मैं हैदराबाद से हूँ। 1.25 लाख बार शंखनाद का संकल्प है मेरा। ऋषि शृंग महाराज जी का वंशज हूँ, जो राजा दशरथ के पुत्र से यज्ञ कराए, उनके वंश से हूँ। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेश यज्ञ करावा। अभी तक So that is Shankhnad. For every auspicious beginning in Sanatan Dharma, we see that the conch shell is of course sounded, and you can see bhajans also reverberating. हम उनको लाएंगे भारत में, फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। So many devotees and people who are so excited about Ram Lalla. In fact, I have with me another Bhakt who is right now holding in his hand the sand that was used for Ram temple. हम लोग ये राम मंदिर के अंदर से ये मिट्टी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र भूमि की मिट्टी है। मैं पुणे से संजय डागा हूँ, मेरे खेत में इसको लेके जाऊँगा और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपका अभी अयोध्या में आगमन हुआ है तो पूरे विश्व में एक शांति लाइए और बंधु भाव का भाव जागृत कीजिए। धन्यवाद। और ये आप जैसे किसी को देंगे आपके पास रखेंगे? ये मेरी जो पुणे में खेती है, उस खेती में मैं ये मिट्टी डालूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे आगे की सारी पुष्टियों को राम जी का आशीर्वाद बना रहे। From Ayodhya right now, as we are counting down to the grand inauguration of the Ram temple, and I have with me devotees, of course, and they all want to speak. Sir, you are from Maharashtra, you were telling. I am from Maharashtra, just near to Pune. Alandik Tirth Kshetra is there. ज्ञानेश्वर महाराजानां समाधि स्थानम विद्यते तत्र। मैं जिस संप्रदाय से हो, वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी। जब राम राज्य होता है तो उस समय में क्या परिस्थिति होती है, वो हमारे तुकाराम वारकरी संप्रदाय के जो तुकाराम महाराज जी वो कहते हैं कि अब राम का राज्य होता है तो उस समय में संसार में किसी को भी किसी बात की कमी नहीं होती। झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी, धरणी धरे पीक। इस भूमाता से जो है हमारा सस्य जो है, मतलब ये धान्यादिक जो है वो बहुत उपज होती है उसकी। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, गोमाता और महिषिया ये जो है वो बहुत दूध देने लगती है। दूध भी बहुत हो जाता है, मक्खन भी बहुत हो जाता है। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ होये। हम जो प्रजाजन जो है वो नित्य राम नाम का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ उवे। कब कब करेंगे? दलिता कांडिता जेविता गे बाई। मतलब जब भी वो पुराना जमाना था उस समय में वो पिसा जाता था, वो हट्टी पे पिसा जाता था, तो उस समय में वो भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवान का रामचंद्र प्रभु जी का गुणगान करते हैं। दलिता कांडिता भोजन करते समय भी भगवान का गुणगान करते हैं। यानी कि काफी कुछ अब फिर से चेंज आने वाला है। अयोध्या में भी बहुत चेंज दिख रहा है। मैडम, मैं बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और यहाँ का विकास, जैसे कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या राम मंदिर बनने से कोई विकास नहीं, क्या रोजगार, क्या कुछ भी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे राम मंदिर बनने से यहाँ की सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और प्लस घाट और यहाँ की सड़कें, ड्रेनेज, वो सब कुछ दिख रहा है। आदमी देख रहा है यहाँ रोजगार से लेके काम भी टॉप 1 का हुआ है। और जो 500 वर्षों का तपस्या था उसका परिणाम का फल है जो राम लला का या प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की स्थापना हो रही है। धन्यवाद। राइट। राम लला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूँ, राम लला तेरे छाया में दिन जिंदगी गुजार दूँ, दिल खुश हो जाए तेरा इतना मैं प्यार दूँ, सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, जिस दिन मिल जाएगा दर्शन मैं तर जाऊंगा, जिस दिन मिल जाएगा दर्शन मैं तेर जाऊंगा, अपने आस पास में मेरा ठिकाना बना दो, सुबह शाम पूजा करने मैं चल आऊंगा, सुबह शाम पूजा करने मैं चल आऊंगा। These are the first and exclusive images of Lord Ram Lalla. In fact, the exact idol that is placed inside. These are pictures from right when the Anushthan was being carried out, before it was placed in the Garbhagriha, in the Sanctum Sanctorum. But this, of course, has been made out of black stone. The Krishna Shila is what it has been called, the kind of marble that is being used. Remember, there was, in fact, a huge discussion on how whether the Lord Ram's idol will be made out of black or white stone. That is now has been decided upon and now has been in fact been disclosed to the people to see how it is made out of Krishna Shila, the darkish complexion as of the Lord Ram that is seen. This is, remember, an idol of Lord Ram at the age of 5 years, and that is why it is an idol of Ram Lalla. So the kind of characteristics that had been kept in mind before selecting the idol had been whether if the idol will reflect innocence and divinity, and these two things had been kept as a benchmark by the trust members to select the idol. Remember, there were 3 sculptors who had been given the task of making this idol. Arun Yogi Raj, in fact, had been the one whose idol has been selected, and he was the one who was also present when the entire Anushthan was being carried out. And now, of course, the idol has been placed inside of the Sanctum Sanctorum. It has been completely covered with a cloth, and there is a blindfold on the idol's face as well. And now this is also a part of the entire Pran Pratishtha. The blindfold is going to be removed on the 22nd of January in the presence of 5 people, that is the Prime Minister, UP Governor, UP Chief Minister, RSS Chief, and also the main priest Nitra Gopal Das. So that will be removed in the presence of those 5 people. The blindfold will be removed and the mirror will be shown to the idol, and that is the final ceremony of the Pran Pratishtha that will culminate on 22nd of January. 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। फिलहाल बात की जाए तो हम आपको बता दें कि महाकाल की नगरी यानी कि महाकाल ट्रस्ट के द्वारा भगवान महाकाल का जो भोग है 5 लाख लड्डू जो है वो अयोध्या भेजे जाने, और ये देखिए 5 जो ट्रक हैं इनमें 5 लाख लड्डू हैं जो महाकाल का प्रसाद है वो 5 लाख लड्डू के रूप में यहाँ से इन 5 ट्रकों से यहाँ से अयोध्या भेजे जा रहे हैं, और यहाँ अयोध्या में रामलला को इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। देखिए 1 2 3 इस तरह से पूरे 5 ट्रक हैं और उसमें 5 लाख लड्डू हैं जो कि महाकाल का प्रसाद है, और इस प्रसाद का प्रसादी रथ जो है ये यहाँ से रवाना हो रहा है और ये रथ जो है अयोध्या पहुँचेंगे, और अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें इन्हीं लड्डुओं से भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन ट्रकों को हरी झंडी दी है। महाकाल के मंदिर में इन लड्डुओं का जो है निर्माण हुआ था। वैसा देखा ये देखिए इस तरह के लड्डू हैं जो यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो लड्डू है अयोध्या जाएंगे, वहाँ पर भगवान राम को इनसे भोग लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, और यहाँ से ये 5 ट्रक जो हैं
वो रवाना किए जा रहे हैं। इनमें 5 लाख लड्डू हैं और इन लड्डुओं से ही रामलला को भोग लगाया जाना है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्येंद्र सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। नमस्कार, मेरा नाम है मुतनाथ तिरलापुर, गदगा डिस्ट्रिक्ट रोहन तालुका करके कट्टी ग्राम। मैं अयोध्या राम मंदिर को 2000 किलोमीटर संकल्प कर से अभी रात को भी यहाँ पे पहुँच गया। गांधी की तरह आपने पोशाक पहनी है, उसका क्या महत्वता है? वो राम मंदिर आप उसमें आए हैं 22 जनवरी के लिए। मैडम जी, ये तो हमारा संकल्प है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वेशभूषण में वो तत्व पालन बहुत जरूर है और महात्मा गांधी जी के भी यही संकल्प था। ये पूरी देश राम राज होने के संकल्प था। मैं भी संकल्प यही है, ये पूरी देश राम राज होने का संकल्प है। हम लोगों भाइयों और बहनों जैसा प्यार से रहने का है और अच्छे से रहने का है। दूसरी आदमी का गलती नहीं निकालने का। हम सब लोगों एक है, हम प्यार से रहने का है, भाइयों बहनों जैसा अच्छे से ये देश में रहने का है और ज़रा सोचकर अच्छा सेवा ये भारत देश में करने का है। ये तो हमको बहुत खुश हो गया। ये यात्रा में हमारे को भी धारी में सब लोग हमारे को प्यार करा है, गौरव दिया है, जग जगह में खाना गीना सब भी दिया। अच्छा, तुम्हारा ये यात्रा हम सबको लोगों के पसंद आया बोला है, इसके लिए मैं ये यात्रा शुरू करा जी। तो आपसे मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि 22 जनवरी के लिए अयोध्या आपको किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से सजा हुआ है, किस तरह से जो राम नगरी कहा जा रहा है अयोध्या को, वो पूरे सेंस में बनी जा रही है? ये तो यहाँ पे आ गया ना, मेरे को स्वर्ग में आया जैसा हो गया मेरा। अभी ये राम राज स्वर्ग में आया, मैं इतना प्यार हो गया, इतना। ये मेरा पद यात्रा सुवर्ण अक्षर में लिखने का है। क्या अद्भुत है ये यात्रा भी, मेरा जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। आपको भी माध्यम वालों को विनती करता है, मैं तो थोड़ा हिंदी आता है, थोड़ा भी इंग्लिश आता है, मैं 7 पढ़ा। चलने का बोले तो 50,000 किलोमीटर चाहता है और बात करने का नहीं आता मेरे को। आपको विनती करता है, मैं थोड़ा बात करने वाला आदमी है, बात करता है और काम करने वाला है, काम करता है, बातचीत करने वाला नहीं। मैं मेरा तत्व आदर्श पालन सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ। और यहाँ पे देखिए सब लोगों ने फ्रीडम फाइटर से हाल भारत देश के लिए त्याग बलिदान हो गया उसका सबका उसका। All right, so we have a word coming in from Gandhi himself, it seems. So this is how essentially people of Ayodhya are gearing up, and people from across the country are gearing up for 22nd of January. Viewers, top updates we're tracking right now. UP CM Yogi Adityanath visits Ram Janmabhoomi and offers prayers. He was also inspecting the arrangements ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Confederation of All India Traders announced that Amazon India has been engaged in the deceptive trade practices by selling sweets under the guise of Sri Ram Mandir Prasad. The committee expressed their concern on the potential damage for the religious sentiments. Cassandra, German singer, sends her love and devotion to the Lord Ram by posting a version of the Ram Bhajan. All the singers globally contribute their love by singing out Ram Bhajans. A sari embellished with the replica of Lord Ram temple in Ayodhya is being sent to Ayodhya from Telangana. The handloom weaver has been preparing this special sari embellished with the replica of Lord Ram temple in Ayodhya. Chief Minister of Madhya Pradesh has sent 5 lakh laddus for Lord Ram, which is made in Ujjain. The prasad was loaded in trucks from Bhopal. The history says that Ram Lalla enjoys laddus made by Mahakal Trust. One lakh laddus are being prepared at Tirupati for the Pran Pratishtha ceremony. And viewers, let's move ahead to the other stories that we are tracking. Devotion for Lord Ram knows no barriers, be it religion or nationality. With only 3 days to go for the grand inauguration of the Ayodhya Ram Mandir, global singers contribute by praising Lord Ram through Ram Bhajans. Cassandra, a German singer, has posted her version of the Ram Bhajan, and it has gained widespread
popularity. Let's listen in. राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. And viewers, we are tracking all the developments from ground from Ayodhya. Now we have the largest team of reporters. We have Republic TV reporters, we have Republic Kannada reporters and Republic Bharat reporters on ground getting you the top updates. Taking a very short break, much more coming up on the other side as we count down to the mega Pran Pratishtha ceremony on Jan 22nd. Stay tuned. I want to soar above the skies and fulfill my responsibilities. With LIC. Paid your LIC premium? On time. दिल की सुनो, LIC चुनो. LIC हर पल आपके साथ. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं. टाइल्स तो बड़े होने चाहिए. सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई. सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ. परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे. I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I knew that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom B Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. As
India awaits a grand Pran Pratishtha ceremony, the Congress is at it again. A day after insulting Ram Bhakts, Congress leader has now berated Ram Lalla, saying that the idol does not look like a child. That is right, viewers. Big update coming on Republic TV, and as we keep getting more updates, let's tell you exactly what is happening. We are seeing that Congress has spoken about the Ram Lalla idol and has said that does this idol even look like a child? That's the question being asked. Remember that we already showed you the first visuals of the Ram Lalla idol inside the Garbhagriha of Ayodhya Dham temple. And that idol depicts a 5-year-old Lord Ram. But the Congress is questioning the idol itself and saying that this idol does not look like a child in any way, shape or form. That is the comment coming in from the Congress, where the Congress has said that this idol does not look like a child at all. Now remember that this idol you see on your screen on the left-hand side has been installed. The idol is made by Karnataka's renowned sculptor Arun Yogi Raj. It was selected for installation at the Ram temple in Ayodhya while we count down for the grand consecration ceremony that will take place on Jan 22nd. अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवी और सज्जनों, मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है
कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा। हमने दुनिया के सामने कहा है, अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो, आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम की तरफ रुचि रखती है क्या, वहां पढ़ती है क्या? और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर
भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो। इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी
ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुल्ली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपेंशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के वैभवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। Sir, thank you very much for gracing this inauguration ceremony of Boeing India Engineering and Technology Center campus. जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए. Ladies and gentlemen, as the Honorable Prime Minister departs from the venue, please do remain seated until he will leave the venue smoothly. The Prime Minister, who was snubbed by the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, did not receive him at the airport. The Prime Minister himself there on stage, being cheered by the people in the crowd, telling the Chief Minister this keeps happening, almost trolling the Karnataka Chief Minister there. I will get you that sequence when we come back. Boeing facility opening there in Bengaluru, big campus. That's the big headline this minute. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त. 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. हमारा संकल्प विकसित भारत. पोलाची जाना था. अगली बस कब है गुरुजी? सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको. आप पोलाची जा रहे हो ना? चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे. अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है. हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है. टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे. अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा. टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स. हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड. गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था. इसी कड़ी में योगी सरकार उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत सीड मनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान कर रही है. कृषक उत्पादक संगठनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेट के प्रमाणीकरण और उसके बीज उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए कार्य किया है. इसके लिए उनको 4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है. योगी सरकार मिलेट्स मोबाइल परामर्श केंद्र के लिए 10 लाख रुपए और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपए का अनुदान भी दे रही है. बढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कराता है. आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. Republic TV is live from Ayodhya, all decked up for the grand Pran Pratishtha on the 22nd of January. Let me cut across straight to my colleagues who are in Ayodhya. We have about 20 journalists live on the ground. Republic TV, Republic Bharat, Republic Bangla, and Republic Kannada on the field in Ayodhya, bringing us these reports. The atmosphere from both these vantage points, of course, are so colorful and are so enthusiastic and electrifying. Only, people who are there like us are actually able to feel that, isn't it? And right now, as I was reporting from Hanuman Gadi, people are very excited. आप कहाँ से आए हैं और आपने एक you have taken an oath for Shanknath? मैं हैदराबाद से हूँ.
सवा लाख बार शंखनाद का संकल्प है मेरा। ऋषि श्रृंग महाराज जी का वंशज हूँ, जो राजा दशरथ के पुत्र से यज्ञ कराए, उनके वंश से हूँ। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेश यज्ञ करावा। अभी तक So that is Shankhnad. For every auspicious beginning in Sanatan Dharma, we see that the conch shell is of course sounded, and you can see bhajans also reverberating. हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। So many devotees and people who are so excited about Ram Lalla. In fact, I have with me another bhakt who is right now holding in his hand the sand that was used for Ram temple. हम लोग ये राम मंदिर के अंदर से ये मट्टी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र भूमि की मट्टी है। मैं पुणे से संजय डागा हूँ, मेरे खेत में इसको लेके जाऊँगा और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपका अभी अयोध्या में आगमन हुआ है तो पूरे विश्व में एक शांति लाइए और बंधु भाव का भाव जागृत कीजिए। धन्यवाद। और ये आप जैसे किसी को देंगे आपके पास रखेंगे? ये मेरी जो पुणे में खेती है, उस खेती में मैं ये मट्टी डालूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे आगे की सारी पुष्टियों को राम जी का आशीर्वाद बना रहे। From Ayodhya right now, as we are counting down to the grand inauguration of the Ram temple, and I have with me devotees, of course, and they all want to speak. Sir, you are from Maharashtra, you were telling. I am from Maharashtra, just near to Pune. Alandik Tirth Kshetra is there. ज्ञानेश्वर महाराजानां समाधि स्थानम विद्यते तत्र। मैं जिस संप्रदाय से हो, वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी। जब राम राज्य होता है तो उस समय में क्या परिस्थिति होती है, वो हमारे तुकाराम वारकरी संप्रदाय के जो तुकाराम महाराज जी वो कहते हैं कि अब राम का राज्य होता है तो उस समय में संसार में किसी को भी किसी बात की कमी नहीं होती। झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी, धरणी धरे पीक। इस भूमाता से जो है हमारा सस्य जो है, मतलब ये धान्यादिक जो है वो बहुत उपज होती है उसकी। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, गोमाता और महिषिया ये जो है वो बहुत दूध देने लगती है। दूध भी बहुत हो जाता है, मक्खन भी बहुत हो जाता है। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ होये। हम जो प्रजाजन जो है वो नित्य राम नाम का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। धरणी धरे पीक, गाई ओढ़ल्या म्हशी, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ उवे। कब कब करेंगे? दलिता कांडिता जेविता गे बाई। मतलब जब भी वो पुराना जमाना था उस समय में वो पिसा जाता था, वो हट्टी पे पिसा जाता था, तो उस समय में वो भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवान का रामचंद्र प्रभु जी का गुणगान करते हैं। दलिता कांडिता भोजन करते समय भी भगवान का गुणगान करते हैं। यानी कि काफी कुछ अब फिर से चेंज आने वाला है। अयोध्या में भी बहुत चेंज दिख रहा है। मैडम मैं बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल। Okay, so these are the first pictures that we are getting. You have seen the picture of the Ram Lalla for the first time without a blindfold, and we are hearing that this picture was perhaps taken at the workshop
or before it was placed at the Garbhagriha. And that's the first image that's coming in. The photo of the Ram Lalla idol for the very first time. We'll try and go across to Abhishek Kapoor, our senior executive editor, who will be joining us on the phone line. We'll go across to him to take us through this picture. It's for the first time that you're seeing the full picture. You've seen parts of it. You've seen the statue with a blindfold, but for the very first time, the first photo of the idol, and it's been shared by a few who are inside the Ram Mandir itself, some who are involved perhaps with the making of this idol. We are hearing that this picture itself was taken in a workshop before it was placed inside the Ram Mandir. The official Pran Pratishtha, of course, will happen on the 22nd of January, in about exactly 3 days from now. It's on Monday, but for the first time, we are seeing the first picture of the Ram idol, the Lord Ram idol, without a blindfold. And it depicts the deity as a 5-year-old child in a standing posture. That's the idol that has been carved by Arun Yogiraj, who's from Karnataka. And that's for the first time that you're seeing the idol being unveiled without a blindfold. This is the new idol of Lord Ram, placed inside the Ram temple, which was yesterday. It was placed officially yesterday ahead of the Pran Pratishtha, the consecration ceremony on Monday. And the first photo of the idol was also shared by several union ministers this morning. That, of course, was with a blindfold. And it's a 51-inch idol. It's a 51-inch idol sculpted by Arun Yogiraj, who's from Mysuru in Karnataka. It's made of black stone. And that's for the first time that you're seeing the Ram Lalla idol without a blindfold. We'll go across and get some voices on the story. Abhishek Kapoor, Aishwarya will be joining us on the phone as we speak over these pictures. And we'll go across to our correspondents as well, live on the ground in Ayodhya. The rituals for the temple consecration started from the 12th of January. The rituals began on the 12th, and on the 22nd of January, the Prime Minister will be in Ayodhya. The Prime Minister will be performing the puja for the Pran Pratishtha, and this is what we have learnt. It's not confirmed yet. And what we also know so far is that a team of priests led by Lakshmikant Dikshit will perform the main rituals of the Pran Pratishtha. And these are some of the details that we're picking up. Priyanka is on the phone line. Priyanka, this is for the first time that we're seeing the Ram Lalla idol. Depicts a young Lord Ram, perhaps as a 5-year-old child, and it's for the first time that we're seeing it without a blindfold. Priyanka. Well, absolutely, Niranjan. The first pictures of Ram Lalla, in fact, accessed by Republic. We're putting that out on our screens for our viewers to see how essentially the idol is going to look, because right now it has been completely blindfolded and has also been covered in cloth and has been kept inside the Sanctum Sanctorum. And it is only after 22nd of January that the blindfold will be removed. This is the last ritual of the Pran Pratishtha, of the consecration ceremony that will be carried out when the blindfold, in fact, will be removed from the idol, and that will be in the presence of the Prime Minister Narendra Modi, with the Chief Minister Yogi Adityanath, UP Governor Anandiben Patel, and RSS Chief Mohan Bhagwat and Nitya Gopal Das, the main priest of the temple as well. And right after the blindfold that will be removed, there will be in fact a mirror that will be shown to the idol as far as rituals go. And this is the belief and this is essentially the rituals that are followed in the Pran Pratishtha as well. But these are, of course, pictures that had been taken right after the idol had been made by the sculptor Arun Yogiraj. And right after that, there was a picture that had been taken because as far as rituals go, after the Anushtan is done of the idol, after it is immersed in water, milk, ghee and food grains, and there are apologies asked for from the idol as well. It is completely blindfolded and nobody is allowed to take that blindfold off till the Pran Pratishtha is carried out. But these are pictures that had been taken right after the idol had been constructed.
in fact, had been made, and post that, of course, all of these rituals had been carried out. But these are, some of the updates and the features that we are picking up of this idol, the first pictures that we are putting out on our screens for our viewers to also take the darshan, so to speak, Niranjan, of the idol that has been placed inside of the Sanctum Sanctorum. And of course, this idol that had, made the journey of over 8 to 9 months for being made by the sculptor, who had also been selected over the sketches that had been made by the architects of the temple as well. There were sketches that had been submitted by the Sompura brothers. Post that, of course, there were 3 sculptors who had been given the task of making this idol. Out of that, there was Arun Yogi Raj's sculpture that had been selected by the trust. Now, once again, for our viewers to understand how the selection process had been going on, the entire trust members had gotten together, and there were saints and seers from Kashi as well as Ayodhya who had looked at this idol, and they had kept in mind the 2 characteristics of whether this idol showcases, divinity or innocence. And these were the 2 parts that had been kept. Just bear with me. I have Dushyant Sridhar. Priyanka, just stay with me for a second. I have Dushyant Sridhar, a Vedic scholar, joining us on the phone line. I'm not sure whether this picture was meant to be released, Dushyant, but the entire media has got access to this picture. But what we believe is that this picture was from the workshop. That's what some versions suggest, that this was from the workshop. But it shows Lord Ram, a young Lord Ram, a 5-year-old Lord Ram, in a standing posture. It's a beautiful picture. It's a mesmerizing picture. If you're seeing this, Dushyant, can I get your views on this? And what do you think when you look at that idol? Viewers, yes, of course, I did get to see the picture. I saw the Divya Mangala Vigraham of Sri Rama in 2 postures. One, the same posture, but in 2 different backgrounds. Bhagraham, and second, within the workshop. Yes, yes. Are you in front of a television set, Dushyant? I think I lost the line there, Dushyant. Okay, I lost the line there with Dushyant. I'll go back to him. But you were telling us about the entire procedure. Priyanka, I'm coming back to you as we stay with the picture, the first picture of Lord Ram. As we see it, that's the first picture that's been revealed. That's the first full face that we have seen of the Ram Lalla idol for the first time on television. And it's going to be, of course, consecrated. The Pran Pratishtha ceremony is on the 22nd of January, when the Prime Minister will be present along with 5,000 to 6,000 other dignitaries. Personalities being flown in from across the country, and several ceremonies will be held before the Pran Pratishtha happens as well. Let me go across to Priyanka. Priyanka, take us through the procedure now. What happens from now until the 22nd? And on the 22nd, why don't you tell our viewers about the official ceremony and all that's involved? Well, that's right, Niranjan. The journey of the idol, as I was also describing earlier, that of course, how the scriptures had been made, the sketches had been made by the architects and then had been given to the 3 sculptors that had been selected, 2 from Karnataka, 1 from Rajasthan, and all of these 3 sculptors had been holed up in Ayodhya, and then of course for 6 to 8 months they had made this idol, and out of this there were two other idols as well that had been made out of white marble as well, but this one is of course of black marble that has been selected of Arun Yogi Raj. And then, of course, since the Anushthan had been going on day before yesterday, the idol had in fact been immersed in all of this holy water, etc. And then, of course, we had seen that the idol had made that journey from the place where the yagna was being carried out towards the temple. Now, in the temple, there was a 100-meter parikrama that had been done. Now, as far as rituals go, Niranjan, the idol was supposed to be carried by the saints and seers across the entire city. But, this is the entire city that we're talking about. The number of people who are outside here and how the government machinery, in fact, had stated that there might be a law and order situation if that idol is carried out in this procession across the city, because there will be hundreds of people who will be wanting to see the idol, who will want to touch the idol, and if God forbid there is any kind of mishap, there will be a huge law and order situation, because of which the idol was then made to do a parikrama of 100 meter inside of the temple premises itself, and then of course had been placed in the Sanctum Sanctorum.
which has also been made out of white marble, white Makrana marble. And we've seen those pictures as well, Niranjan, of how the idol stands out because it is made out of black marble. In the entire Garbhagriha, the entire Sanctum Sanctorum, which has been made out of white Makrana marble. So it's quite a sight to really see when we look at the Sanctum Sanctorum pictures with the idol inside. And now, of course, speaking about the rituals, as we were talking about it, there will be a lot of rituals. There was Jal Yatra that was being carried out yesterday. Now today again there is also a lot of yagnas that is being carried out. This is all being conducted by the saints and seers of Kashi who are present inside of the Ram temple. Once again, to reiterate, of course, nobody is allowed to go inside, but near the Sanctum Sanctorum itself, the main puja is being carried out. Now today and tomorrow as well, that will be done. Because from tomorrow, that is 20th till 22nd, no devotees will be allowed to go inside, because right now this is the route that leads up to the main temple, and you can see the number of people who are wanting to go inside and do the darshan of the Ram temple. But can I just ask you to just hold on prevented. for a second? I am getting in Abhishek as well. Abhishek is joining us on the phone line. Sorry to interrupt you there, Priyanka. While I have you live, I'll just get in a word from Abhishek as well. Abhishek, that's the first picture that we have of the Ram Lalla idol. Without a blindfold, it's a mesmerizing picture. In fact, that's the first feeling that anybody gets when you look at that glowing image of Lord Ram, perhaps as a 5-year-old. Abhishek, your thoughts when you look at this picture and what we have ahead of us? Well, Niranjan, obviously goosebump moments. So this is a picture, of course, taken earlier. In the present instance, as we speak, the Ram Lalla idol has the eyes covered, because that's how the ritual is, that when the Pran Pratishtha happens, only after that the eyes are opened and in front of a mirror, because of the energy that's there when the Lord arrives in the body of the idol. The ritual is that the mirror breaks. So we are getting a picture of earlier time, maybe taken a few days or perhaps when it was made. But the Lord Ram Lalla, as of now, remains with his eye covered. As it happens, as it is given in the text, Lord Ram was of a sham complexion, as it is called, a dark complexion, and that was to represent the blue-black lotus of similar to that of Lord Vishnu. And since he was the avatar of Vishnu, that's why Ram is supposed to have a dark skin. And with a lot of deliberation and thought, this stone was selected, and now we are seeing the idol roop of Lord Ram Lalla. Of course, when the Pran Pratishtha happens, that's after that you start believing that God actually resides in the idol, and then you communicate as a devotee with your Lord in that idol. So that ritual is going on. Remember, Pran Pratishtha processes started a couple of days back, and 22nd January would be the culmination, when in the presence of all the Yajman, including Prime Minister Narendra Modi as one of them, the eyes of the Lord would be opened, and among the chants of the scriptures, the God would be invited to reside in this very idol that we are seeing in the pictures, Niranjan. Yes. Abhishek, on the 22nd, why don't you tell our viewers the process, the Pran Pratishtha, the rituals, the traditions, and how it's going to unfold on Monday? So every day, some or the other ritual is happening, Niranjan, already. Earlier, the plan was that Lord Ram Lalla would be taken around the town and he would be visiting all the temples, and then he would come back to the temple and installed at the Garbhagriha. Now we are told that there are going to be 3 images of the Lord Ram Lalla. One is, of course, the small one, Lord Ram Lalla, which has existed in Ayodhya since 1947-48, when he appeared inside the Babri structure, and which is a small one. Remember, almost like the palm of your hand, and many of us have done the darshan there. The Lord Ram Lalla, which remained in a tent for 3 decades after 1992, and then since then has been in a makeshift temple structure. That Lord Ram Lalla would be there next to this Lord Ram Lalla, which we are seeing, for which the Pran Pratishtha would happen.
And then there would be another Lord Ram Lalla idol, like you see in Bhubaneswar, for example, when once a year the Lord Jagannath comes out and goes out for a city tour to meet his devotees. Similarly, an arrangement is being made so that if the temple trust so decide that once a year Lord Ram Lalla has to go and do around town of Abhishek, Ayodhya, I think Dushyant Sridhar is also on the phone line. Abhishek, do you want to take a question with him? Vedic scholar Dushyant Sridhar on the phone line. Do you want to take a question with him, Abhishek? I mean, who better than Dushyant Sridhar Niranjan to really explain to you the rituals and the exact moment when the Pran Pratishtha happens, when the priests invite the god to come and reside in the idol so that the idol gets a life of its own. I think Dushyant can explain better. Namaskaram to all your viewers. Dushyant, a lot of people watched what you had to say. Go ahead. Yeah, so I did get to see, like you all, the Divya Mangala Murti of Prabhu Sri Ramachandra. And what I understand from it is being showcased as Balarama, as in his childhood days. And looking at the curly hair tresses, I'm reminded of a shloka in the Valmiki Ramayana which says, Kakapaksha dharam veeram jeshtham me datum arhasi. Kakapaksham denotes the curly tresses that hang on either sides of the temple locks, and that was the fashion of those days. And probably commentators say that Rama was a fashionista. So probably those hair tresses remind me of Valmiki's shloka. And then there is a prabha. There is an arch, and in that arch we also see two eternal servants, Seshabhutas to Prabhu Sri Ramachandra. One is Garuda and the other is Hanuman. I also witnessed the Dashavatara in the Prabha. So that also reminds the central figurine, which is denotive of Narayana or Vishnu. And then, of course, the Netra Unmilanam, the opening of the eyes, will happen on the 22nd of January, is what I presume. With respect to Prana Pratishtha, Abhishek, it is a very important kriya that happens when a new temple is formed, because we don't have any of the murtis that existed before the demolition of the temple by Babur. So what we have exactly now is a new murti. So for a new murti, a Prana Pratishtha has to happen. And following that, there will be the establishing of the other sannidhis based on the panchayat of worship. And they will also adhere to the agamic rules. And something very interesting that I noted a few days back is when a lot of purohits were reciting verses from the Shukla Yajurveda. Interestingly, Ramayana says that Dasharatha and his ancestors belong to the Shukla Yajurveda. I was very happy to note that Shukla Yajurveda and Shatapatha Brahmana were being recited. So all this does say that besides the overall national sentiment, there is also the adherence to the Shastras as much as possible. And kudos to the temple authority. तैयार होगी, इसके अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है।
और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री राम लला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की सभी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राम की पैड़ी से मीडिया को उठाया जाएगा कैसे? Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh Chief Minister, talking about the arrangements in place. And he's in Ayodhya, reviewing the preparedness of the Ram Mandir. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh there, he's been there since morning and he's been taking stock of all the preparations, saying that the local administration, state government doing everything that's required, everything that's needed for a date that the whole world will be watching Ayodhya very, very closely with a lot of devotion, of course, and saying that all facilities are being provided for all the thousands and thousands of people who are flocking to Ayodhya. Priyanka has been there for the last few weeks. Priyanka, our correspondent. Priyanka, how many people are expected in Ayodhya? What kind of arrangements have you seen there? How many people are there? How many people more are expected there? You've been there and you've been seeing the crowds. Give us your view of what's happening on the ground. Well, that's right, Niranjan. You know, the projections for post 23rd as of now is over almost 2 lakh people per day.
Now towards till the 22nd itself now, because 20th to 22nd the darshans will be closed. We are hearing that today in fact is the last day for that darshan to be carried out. So we are already looking at how the government had also made this projection that over 1.5 lakh people are going to be here. So you can see the kind of number of people who are walking towards the main temple to do their darshan as well. The last few hours till the Pran Pratishtha happens, that this darshan will be allowed to take place, and that's exactly what we are witnessing over here right now. And till 22nd itself, we are already talking to a lot of people. We are speaking to a lot of people who have come from across the country here in Ayodhya just to get a glimpse of the new temple so that they can carry out the darshan as well. And just, panning our cameras here at the Lata Mangeshkar Chowk, that also helps us understand how many people in fact are here right now, all of them going from one place to the other. It's a central point here in Lata Mangeshkar Chowk. Towards there is the Ram Ki Peri, where as well near the Saryu Ghat, now that the sun is going to set, people are going to walk towards there for the aarti as well. So all of that is in fact something that we are witnessing. But as far as the security kind of obstacles goes, Niranjan, we have speaking to the government machinery, the entire government machinery at work, then be it the local municipal bodies and the local level police officials, right from the superintendent of police to the SSP as well, and the DGP of the state as well, who is coordinating and making sure that the security is in place. Of course, there is an RAF deployment on the ground as well. A lot of barricading across the entire city, just like this one that you will be able to see across the city of Ayodhya. A lot of checkpoints like that, or that you can see right now that we are showing to our viewers, where policemen are sitting and making sure that there is no untoward incident, and that all of the movement of Yeah, I think we have a poor line with you there. Priyanka, we have a poor line with you. I have a poor audio line there with you. It's understandable with the kind of crowds that are expected there. Despite all arrangements, there will be fluctuations in connectivity. That's expected. But on your screens, ladies and gentlemen, the first picture, the first image of the Ram Lalla idol, that mesmerizing image, that's a young Balarama who will be inside the Ram Mandir in Ayodhya. Taking a short break here on Republic TV. Live coverage, 100% live coverage from Ayodhya continues. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नू टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली के बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। तो जोड़े वो लैपटॉप से अगे पढ़ाइयां नहीं होंदियां सी बच्चों दियां, जानी दी हुण तो जमा ही भोरा भी नहीं कट के ते लगदा। बिजली का बहुत सोहना सूबा सरकार ने बहुत सोहना काम कीते। ये गौरमेंट तो बनाती लोगों ने, हुण अपनी नैक्सट जनरेशन किवें बनू, अगली पीढ़ी जिहड़ी है उन्होंने आपां किवें उच्चा लैके जा सकते हैं, गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं। ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। देख इत्तू सी है
थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम्स। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Ahead of the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony, a laser show featuring images of Lord Ram took place in the office of the Gujarat BJP President C.R. Patil in Surat. Tripura government issued a notice stating that the state government offices, educational institutions will remain closed till 2:30 p.m. on the 22nd of January for employees to participate in the celebrations of the Ram Lalla Pran Pratishtha. As the nation is preparing for the Pran Pratishtha ceremony at the Ram Mandir, city of Ayodhya, undergoing a purification work carried out by students across the city, adorning the city walls with paintings. Ayodhya also to witness the much-awaited Ram Temple Pran Pratishtha on the 22nd of January in preparation for the arrival of thousands of devotees in Ayodhya. The city has undergone different upgradation works, security measures intensifying by the minute. Selfie spots have been set up near the Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya for devotees. Selfie points decorated with statues, posters, banners of Lord Ram. कहाँ हो तुम किंग? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट। स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। उड़े देश का आम आदमी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है
इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। This is Republic, Niva Bupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18 karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels.